बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 16 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्तिहान के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स का मतलब होता है जबरी कुव्वत। ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर देन आयरन वाई। देखिए बच्चे, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कोरेसिविटी। कोरेसिविटी का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा कि इसका मतलब है कुव्वत, जबरी कुव्वत। इसको हम डिफाइन करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशंस ऑफ गिवन मटेरियल टू ज़ीरो इज नोन एज व्हाट? कोरेसिविटी। इसके बाद है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब है बकाया। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इसमें हमने एक आयरन को रखा, तो जब हम इसमें करंट गुजारते हैं तो वहाँ पे सोलेनॉइड के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब हम अगर करंट को रिमूव करें तो देखें वहाँ पे तो करंट का फ्लो ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी जो हमने आयरन कोर इसमें रखा है, इस पे अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिसियत क्या है? बकाया है। तो रिटेंटिविटी का मतलब होता है बकाया। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन। रिटेन का मतलब बरकरार रखना मैग्नेटिज्म आफ्टर द एक्शंस ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स has ceased is known as what? Retentivity. A comparison of steel with iron from the hysteresis loop given in figure, it is clear that corrosivity force required to demagnetize steel is greater than soft iron. ये इसकी क्या है? रीज़न भी है। Whereas retentivity of steel is slightly less than soft iron. अगर हम फिगर में देखें तो देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रिंग के दरमियान एक ग्राफ है। यहाँ पे देखिए कोरेसिविटी की ताकत ज़्यादा है, रिटेंटिविटी की क्या है? कम है। सो सिंस मटीरियल्स विद ग्रेटर कोरेसिविटी आर यूज एज अ परमानेंट मैग्नेट, सो देयरफॉर स्टील इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the importance of string and stiffness in a design context. The string and stiffness, string का मतलब है ताकत, stiffness का मतलब होता है कड़ा होना, are the mechanical property of solid material which allow to maintain their shape and size when loaded. String means that how much greater force the material can support without breaking, while stiffness gives the resistance of the material to be distorted in shape, size, or in both. We make the use of such kinds of material in daily life, such as iron, aluminium, etc. For designing window, cupboard, T-iron, girder, etc. of different shape, size, and dimension. So these solids are used in engineering industry where they are stretch, squeeze, or twist to design different objects for our daily uses. Question number 3 है, discuss superconductivity of a conductor with the help of curve. अब सुपरकंडक्टिविटी का मतलब क्या है? देखिए बच्चे, कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की ख़ास टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाए तो इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। वो टेम्परेचर जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसी ख़ास टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सो सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी, those material whose resistance becomes zero and very low temperature are known as superconductor. The temperature is called critical temperature and the phenomena is known as superconductor या superconductivity. If we plot a graph between temperature and resistance for a certain superconductor, then we see that with decrease in temperature from high value, the resistance of the conductor also decreases.
Finally, at a certain temperature, the resistance of the conductor becomes zero. Such temperature at which the resistance falls to zero is called critical temperature. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TC से. अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हमारे पास है रेजिस्टेंस. तो वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी किसी ख़ास टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर. सो फिगर में द डैश कर्व, अब यहाँ पे जो डैश कर्व है रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंडक्टिविटी. सो दिस रीजन रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंडक्टर whose resistance does not fall to zero even at 0 Kelvin. Question number 4 है distinguish between crystalline, amorphous and polymer. ये हमने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है, बहुत आसान है, ये ऑलरेडी आपके कोर्स में हो चुका है, तो आसानी से वहाँ से देख लें. अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. देखिए, इलास्टिक का मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी वापस अपनी पहली हालत में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इलास्टिक है. अगर वापस पहली हालत में ना आए तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ अ टेम्पररी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग. Once the external load is removed from an elasticity deformed body, it regains its original shape. In elastic deformation, atoms of the material are displaced temporarily from their original shape, so they return back to their original position after the removal of external load. Amount of elastic deformation is very small, so Hooke's law of elasticity applicable within this elastic region. Second है plastic deformation. देखिए, plastic deformation is the deformation when a body is plastically deformed. It retains its deformation shape even after the removal of external load. The plastic deformation, atoms of their solid are displaced permanently from their original lattice site, so they don't return back to the original position even after the removal of external load. Amount of plastic deformation is quite large, so Hooke's law is not applicable. क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है. फेरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या फ़र्क है, इम्तिहान से लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग थ्योरी में देख लें. क्वेश्चन नंबर 9 अक्सर पेपर में बच्चे आ चुका है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड सब्सटेंस बाय ड्राइंग कर्व. Soft magnetic material are those material which have a smaller area enclosed by their hysteresis loop. They have low remanent magnetization, remanent लिख रहा है remanency से बकाया. They have low corrosivity. They have high initial permeability. Hysteresis loss is small. Eddy current means circular current loss is small. Use in transformer core, motor, generator, electromagnetic, etc. So area of hysteresis slope is small for soap material. अब यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो B और H के दरमियान जो ग्राफ डाला गया है, इसमें इसका जो लूप है, जो एरिया है, वो बहुत कम है. तो सोप मटेरियल कैन बी ब्रोकन ईजली just after elastic limit. Second है hard magnetic material. Hard magnetic material are those material which have a larger area enclosed by their hysteresis loop. They have a high remanent magnetization. They have low initial permeability.
hysteresis loss is high, eddy current is more for metallic types and low for ceramic types. So they have high corrosivity. 7 है, देखिए बच्चे, यूज इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक सेपरेटर, मैग्नेटिक डिटेक्टर, space car, microphone, etc. Their hysteresis loop is very fat, so they have the hard material cannot be broken just after elastic limit. अब यहाँ पे अगर हम इसकी ग्राफ में देखें तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल. देखिए, a material that stress intensity breaks by the application of external load is known as brittle material, whereas a material that can be drawn into wire is known as ductile material. Brittle material show zero plastic deformation after stress and intensity breaks, whereas ductile material undergo plastic deformation before fracture. Brittle material absorb very small amount of energy before fracture, where ductile material can absorb more energy before what? Fracture. Question number 9 है, how can the conductivity of a semiconductor be raised? So the conductivity of a semiconductor can be raised by increasing temperature of the semiconductor. According to energy band theory, semiconductor has a filled valence band and empty conduction band, just like an insulator. In fact, all semiconductors are insulator at a very low temperature, so the band gap, however, is much smaller than insulator. At a room temperature, when the temperature of semiconductor is raised, as a result, conductivity of a semiconductor is increased. Question 10, very important. Is there any difference in the length of a 20-meter steel girder when standing vertically and horizontally? फिगर में देखिए दो स्टील गार्डर दिखाई गई हैं, एक वर्टिकली है और दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टली. So the horizontal and vertical position of the girder is shown in the figure. We know that stress is equal to force per unit area. So equation number 1 show that stress will be greater if force F is applied in smaller area of a material. No, in case of vertical position, the force F is subjected to smaller area, while in case of horizontal position, the same force F is subjected to larger area. Thus, in case of vertical position, the change in length will be slightly greater as compared to horizontal position. However, these changes are very small and can be detected by ordinary forces. Question number 11. Why would be advantage use superconductor in MRI machine? देखिए बच्चे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग provide detailed image of organ and structure with the human body. MRI scanner use magnetic field to line up the spin of hydrogen atom in the body. Superconductor are material that show zero resistance at a reduced temperature. फायदे हैं, the advantage of using superconductor in MRI machine is that at zero resistance, electrical signal are not dissipated in the form of heat. So all manner of electrical and electronic devices and component become far more efficient. So thank you students. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे.